Ethics in the workplace. Ethics dilemmas at work influence on ethical decision making, rationalization for unethical behavior, and maintaining high ethical standard. How the organizations they maintain the ethical behavior, high ethical behavior, ethical ethics through the ethics training, to maintain or make the good codes of ethical conduct, moral management, whistleblowers protections, social responsibility, where we talk about the stakeholder management perspective on corporate social responsibility, evaluating corporate social performance, and corporate governance. Yes, what is ethics? Ethics is a moral of code of principles, set standards of good or bad or right or wrong in one conduct. Because here we talk about the ethics, the simple definition of ethics is the moral conduct of principles where we set the some standards of what is good, what is bad, what is right, or what is wrong in one context. Ethical behavior, what is accepted as good and right in the context of the governing moral conduct, moral code. So this is the ethical behavior when you talk with the others, with elders, with working place, within the group, within the team, with the management, with your co-workers. So we should have some ethical behavior. So under the ethical behavior, we need to discuss, we need to make a decisions about within the organization. Like ethical behavior, laws, values, and the ethical behavior, like legal behavior, is not necessary ethical behavior. Personal values help determine individual ethical behavior because when we feel कि our behavior is ethical, जब हमारी जो personal values हैं, हमारी जो personal values है वो determine करती है individual ethical behavior से. When you working in any organization, your personal values, your personal norms, what you learn from the society, what do you learn from your educational institutions, what you learn from your parents. So that is all your personal values help determine in individual ethical behavior because personal values is very much important to determine the individual ethical behavior like values underlying beliefs and attitudes that help determine individual behavior, your values and your norms. And what is terminal values and what is instrumental values? Terminal values preference about desired needs. Instrumental values preference regarding the means to desired ends. Like if you talk about, if we more elaborate after terminal values like ambition, ambitious. So ambitious करने के लिए which instrument you want to use to be ambitious. So this is the terminal value and this is the instrumental to maintain the health. Terminal value. How you maintain the health. This is the instrumental value. Which instrument you use to maintain your health. So preference regarding the means to desire and how you achieve the goals. You have a goal, the terminal value, you want to be अब ये करना चाह रहे हैं या ये होना चाह रहे हैं अपनी लाइफ में बट हाउ हार्ड वर्क करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे so this is the meaning of terminal values and instrumental values. If we hear some explanation more about the terminal value and the instrumental value, that is the family security means manager और non manager के लिए terminal values क्या हैं? Family security, health, freedom, comfortable life, and self respect. Health,
family security, comfortable life, self-respect, and wisdom. Instrumental value means honest. If you talk when you talk about the family security, you must be honest. You must be responsible. You must be loyal. You must be loving. You must be capable. If you self-respect, कि अगर हम बात करें कंफर्टेबल लाइफ की बात करें, सेल्फ रेस्पेक्ट इट मींस यू मस्ट बी, जब आप कैपेबल होगी तभी आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट होगी. नॉन मैनेजर्स के लिए इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू, यू मस्ट बी ऑनेस्ट, यू रिस्पॉन्सिबल, यू फेयर विथ योर ऑर्गेनाइजेशंस, तभी आपका कोई रोल ऑर्गेनाइजेशन में बनेगा. इंडिपेंडेंट, लॉजिकल एंड लविंग. So this is somehow the meaning of terminal value and instrumental value. Here are the four views of ethical behavior: individualism views, utilitarian views, justice views, and moral rights views. Let me check. Yes, we have more explanation about these terminologies. Does, like, if we talk about the utilitarian views, does decisions or behavior do the greatest good for the most people? जस्टिस व्यूज की अगर हम बात करें या इंडिविजुअलिज्म व्यूज की हम बात करें, डज अ डिसीजंस और बिहेवियर प्रोमोट वंस लॉन्ग टर्म सेल्फ इंटरेस्ट? Moral rights view, does a decisions or behavior maintain the fundamental rights of all human beings? Justice views, does a decisions or behavior show fairness and impartiality? Yes. Utilitarian means deliver the greatest goods to the most people. When you make the product, you deliver the goods for the all people. Individualism advances long-term self-interest. Individually, moral rights की बात करें, maintain fundamental rights of all human beings, means no any discrimination on race, color, caste. So you have to maintain the fundamental rights of all human beings, not only a particular case that these peoples are related to our caste, so we have to give the more benefits of those people. जो हमारी कास्ट से, हमारे कंट्री से या हमारी नेशन से या हमारे प्रोविंस से ताल्लुक रखते हैं, सिर्फ उनको ही राइट्स देने हैं. नो, मेंटेन द फंडामेंटल राइट्स ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स. यानी हर किसी के लिए एक ही रूल होना चाहिए, मेंटेन फंडामेंटल राइट्स. दे बिलोंग्स टू द एनी कंट्री और एनी कास्ट और एनी कलर और एनी किसी भी जात से वो ताल्लुक रखता है. Fair and impartial treatment of people according to legal rules and standards means procedural justice, like policies and rules fairly applied. Whatever the rules and the policies within the organization, but you have to fairly apply it of all your employees. Not that, यानी हमारे पास एक proverb है ना, show me the man, I will show you the rule. So हमें especially in the developing countries including Pakistan, हमारे यहाँ ये है कि लोगों को देख के रूल बनाया जाता है. But this is not ethics. This is unethical behavior within the organization. So procedural justice means policies and rules fairly applied of all employees, whatever they belongs to the higher level or upper level or the middle level or the lower level. Distributive justice, equally treatment for all peoples. पे प्लान इक्वल होना चाहिए, हेल्थ प्लान इक्वल होना चाहिए, बेनिफिट्स इक्वल होनी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट द रिवॉर्ड ऑन इक्वल बेसिस. अनइक्वलमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं होनी चाहिए, इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए. बट वी हैव अ लॉट ऑफ बैरियर्स within the organization. That's why जो है most of the organizations not going on the right path or right direction. Interactional justice, people treated with dignity and respect. People must treated with that honesty and dignity and respect. So where it's come from?
हम अगर बात कर रहे हैं कि पीपल जो है, लोग जो है, ट्रीट करें ऑनेस्टी के साथ, डिग्निटी के, through the trainings, or through the parents, through the neighbors, or institutionals, educations, through the education. So best weapon that people treat with that dignity and respect. तो पहले थे हमारी जो मेन ऊपर के लोग जिसको कहा जाए, जो अपर लेवल पे लोग बैठे हुए हैं, हम डिग्निटी रेस्पेक्ट वहां से सीखते हैं. Yes, our supervisors are very much clear, very much, they have a dignity and respect. We learn from dignity and respect from the supervisor. We learn the dignity and respect from the parents. We learn the dignity and respect from the friends. We learn the dignity and respect from the working places. अगर वर्किंग प्लेसेस पे ही डिग्निटी रेस्पेक्ट नहीं है, जो जहाँ का कल्चर होगा, यहाँ पे हम कुछ कल्चर की भी बात कर रहे हैं, जहाँ का कल्चर होगा, ऑफ कोर्स we learned that thing. If you compare the working place and developing countries and developed countries, you identified a big gap, and जो comparison है वो तो बहुत यानी एक बड़ी है कि it's a big comparison between the working place here and west. Communitative justice, fairness to all involved. Whatever the people involved, they must be fair. Principle of utilitarian benefit. Utilitarian benefits क्या है? Never take any action that does not result in the greater goods for society. कोई भी ऐसा एक्शन नहीं ले जो सोसाइटी के लिए greater goods for society हो. Never take any action that does not result in the greater, यानी you must take the actions or whatever you make a decisions about they are must good for the society. ऐसा कोई भी डिसीजन ना लें जो सोसाइटी के लिए सही ना हो. लाइक यू प्रोवाइड industries or companies provide the products, they must provide the quality products, so they don't compromise on the quality. They don't compromise on quality, not only the product, but they do not compromise the quality on the education. Even though you provide a good education, because the people come into the institutions to learn something, so give the right education to your students, to give the right training to your employees. Never take any action that infringes on other agreed upon rights. यानी एक लोग एग्री हैं, एक लोग एग्री नहीं है. So you must take actions that agreed upon your rights, whatever you make it. Never take any action that harm that last among us, means the poor and uneducated, the unemployed. Yes. Cultural issues in ethical behavior. कौन से cultural issues हैं ethical behavior? Cultural relativism. Ethics behavior is always determined by cultural context. Yes, of course. जिस तरह का culture होगा, जो ethics behavior है, always determined by cultural context. Moral absolutism. Behavior unacceptable in one's home environment should not be acceptable anywhere else. Ethical impartialism, imposing one's ethical standard on others. More explanation में जाते हैं cultural relativism and ethical impartialism. Like in international business, there is the question of the employment of children. In some countries, it is customary for children to work long hours at a young age, and it is considered acceptable. तो ये चीजें कहाँ पर है, ये कल्चर कहाँ पे एक्सेप्टेबल है, और कौन सी कंट्रीज में ये कल्चर एक्सेप्टेबल नहीं है, जैसे हमारे पास चाइल्ड लेबर है. इंटरनेशनल बिजनेसेस में, इंटरनेशनल लॉज में चाइल्ड
लेबर नहीं है, इवन इनके तो लेबर लास्ट बने हुए हैं. बट दिस इज द कल्चरलिज्म एंड एथिकल इम्पार्शन. कल्चरल ये है कि यानी अगर हम एथिकल इम्पार्शलिज्म की बात करें, कल्चर इन इंटरनेशनल बिजनेस देयर इज द क्वेश्चन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन. क्यों बच्चे क्यों काम कर रहे हैं, वाई under the 18, under the 15, why they children they are working. But most of the countries, developing countries, including Pakistan, India, Bangladesh, they are customary for children. There is no any harm. Acceptable है कि 8 साल का बच्चा या बच्ची भी काम कर सकती है, 5 साल की बच्ची भी काम कर सकती है, 12 साल के बच्चे भी काम कर सकते हैं. So there is a consider acceptable, but this is not a ethical impartialism. This is a culture. Culture ये cultural relativism को वेरी करता है. Ethical impartialism और cultural relativism को if we explain more, the one set of values for all culture. एक ही वैल्यू सेट करे ऑल कल्चर के लिए. कल्चर रिलेटिविज्म में क्या होगा, वैल्यूज आर डिपेंडिंग ऑन द कल्चर. जो हमारे नॉर्म्स हैं, जो हमारे वैल्यूज हैं, वो कल्चर पे डिपेंड करते हैं. लाइक इन अर्लियर स्लाइड एज आई एक्सप्लेन दैट कि बहुत सारी कंट्रीज में चाइल्ड लेबर है, बहुत सारी कंट्रीज में इज अ बिग क्वेश्चन मार्क ऑन द चाइल्ड लेबर. देयर इज अ रिस्ट्रिक्ट for the child to work at any place, at least in the working places, at least in the जो even जो हमारे घरों में बच्चे काम करते हैं वो भी unethical है. But due to the cultural relativism, to means culture very related from culture to culture. Norms और values जो है relate करते हैं हमारे culture से. So international culture में, even international ethical laws में चले जाएं, international जो जो laws हैं 10 ग्लोबल कम्पैक्ट जो laws है उसमें आप चले जाएं, 8 और 9 laws है उसका. तो जहाँ पे लेबर, चाइल्ड लेबर जो है बिल्कुल यानी एक उनका एक रूल बना हुआ है कि चाइल्ड लेबर आर नॉट अलो. Childs are not allowed to work in anywhere. Right and wrong are the sum in all cultures. जो भी right चीजें हैं, जो भी wrong ethical behavior, जो भी right ethical behavior है, वो सारे cultures में embedded होने चाहिए, सारे culture में same होने चाहिए. मगर अगर cultural relativism के पास हम चले जाएं, उनके discourses में चले जाएं, what they said right and wrong depend on the local values that we have a lot of experience about this. The proverb person six are not situation, यानी situation के हिसाब से हमारे ethics नहीं होने चाहिए, but एक legally laws होने चाहिए. In every country every people should follow these ethics. Ethics and national culture. Yes, there are no global ethical standard. कोई भी global ethical standard नहीं है. But the ethical principles of global organizations that reflect and respect local culture norms are necessary for high standard and constant practices. So, how we learn the ethical behavior within the national culture or within the international culture? So, through there are some educations that we need to learn the ethical behavior. We must be ethical. Yes, ethical in the workplace. Ethical dilemmas kya hai occurs when choices, although having potential for personal and or organizational benefits, may be considered unethical. So ethical dilemmas include discrimination, sexual harassment, conflicts of interest, product safety, and organizational resources. If we talk about the discrimination, how we define the discrimination, what does mean by discrimination?
डिस्क्रिमिनेशन लॉ बने हुए हैं। अब इसको हम एक्सप्लेन करते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन लॉ किस बेस्ड पे होता है। डिस्क्रिमिनेशन लॉस डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन वी हैव, यानी मेल डोमिनेंट सोसाइटी पे चले जाए, मेल्स को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है एज कम्पेयर टू द फीमेल, इट्स द डिस्क्रिमिनेशन लॉ। डिस्क्रिमिनेशन लॉ में चले जाए, इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं है वर्किंग प्लेस पे, हियर वी टॉक अबाउट एथिक्स इन द वर्क प्लेस। डिस्क्रिमिनेशन के पास चले जाएं तो डिस्क्रिमिनेशन किस रिक्रूटमेंट, जब हायरिंग एम्प्लॉयज करते हैं उस पर डिस्क्रिमिनेशन है। राइट टैलेंट राइट प्लेस राइट जॉब के लिए अक्वायर नहीं किया जाता, हायर नहीं किया जाता। educated and skillful people always deprived from the organization. So this is the discrimination on based on the pay, discrimination on based on the reward. तो वर्किंग प्लेस पे चले जाएं तो बहुत सारी डिस्क्रिमिनेशन आप मिलेगी। डिस्क्रिमिनेशन ऑन प्रमोशंस, डिस्क्रिमिनेशन ऑन हायरिंग एम्प्लॉयज, सेक्सुअल हरासमेंट की बात की जाए इन 1 or 2 decades पहले चले जाएं तो ये जो एथिकल डायलेमा था सेक्सुअल हरासमेंट, ये बिल्कुल इन नहीं था, अगर था भी तो एक प्रोफाइल नहीं था। मगर अभी सेक्सुअल हरासमेंट एक हार्ड इशू है, डिबेटेबल इशू है हर ऑर्गेनाइजेशंस में, हर सोसाइटी में, हर कल्चर में। सो वी शुड नीड टू नो अबाउट व्हाट इज सेक्सुअल हरासमेंट और किस बेस पे सेक्सुअल हरासमेंट होती है। सेक्सुअल हरासमेंट किस चीज को कहा जाता है? सेक्सुअल हरासमेंट not only just that person who अगर हम बात करें कि अनएथिकल वे से आपसे ट्रीट करे, अनएथिकल इवन आप जो टॉकिंग है अनएथिकल वे से कोई बात भी आपके साथ नहीं कर सकता, मिसबिहेविंग में, सेक्सुअल हरासमेंट में, यानी यू फील वेयर यू फील अनकंफर्टेबल, यू फील अनकंफर्टेबल, यानी कोई आपको घूर रहा है, यू फील अनकंफर्टेबल, दिस इज द हरासमेंट, दिस इज द एथिकल हरासमेंट। अनएथिकल हरासमेंट ये भी हरासमेंट है कि कोई आपको देख रहा है और यू फील अनकंफर्टेबल, so you have a right that you say that कि I feel uncomfortable, you do not see me like that. So there are the different ways of sexual harassment और इस पे education हमें मिलनी चाहिए थ्रू द ट्रेनिंग। इवन अब तो हर उसमें आपके कोर्स में ये एक पूरे यानी सब टॉपिक्स है सेक्सुअल हरासमेंट के। अगर आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बुक में चले जाए, यू फाइंड अ मेनी स्टेटमेंट अबाउट सेक्सुअल हरासमेंट। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की बुक में चले जाए, यू फाइंड सेक्सुअल हरासमेंट। मैनेजमेंट की बुक में आप सेक्सुअल हरासमेंट की बहुत सारे पहलू आप देख रहे हैं। सो यू द नाउ द इंटरनेशनल जो एथिक्स है या नेशनल बुक्स से जो एजुकेशन है वहां पे उन लोगों ने ये चीज जो है बिल्कुल प्रोफाइल कर ली है कि पीपल दे शुड नो अबाउट दिस टर्मिनोलॉजी। conflict of interest, it means that ke uh, uh, like if the organization give the priority of some people, तो वहां पे क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट होगा। गिव द अपॉर्चुनिटी ऑफ सम पीपल नॉट टू ऑल, यानी जो रूल्स बने हुए कुछ लोगों के लिए बने हैं, कुछ लोगों के लिए रूल्स नहीं बने हुए, वो जो भी चाहे कर सकते हैं। दिस इज द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। प्रोडक्ट सेफ्टी, ऑर्गेनाइजेशंस जो है जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं उनकी सेफ्टी प्रोटेक्शंस क्या है, सेफ्टी मेजरमेंट्स क्या है, how they make these products, like some of the products हमारे पास कुछ जो प्रोडक्ट्स है बहुत सेंसिटिव प्रोडक्ट्स हैं। फार्मेसी की तरफ चले जाएं, मेडिकेशन प्रोडक्ट्स की तरफ चले जाएं, फूड प्रोडक्ट्स की तरफ चले जाएं, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की तरफ चले जाएं। So these are the sensitive products. What is the safety of that products? Organizational resources. कौन से organizational resources है to build the performance of the organization? Now here is some checklist of ethical dilemma where you the first step recognize the ethical dilemma. Ethical dilemma है क्या? Identify the ethical dilemma. Step 2 है get the facts and identify your options. Number 3 है
Test each option. Is it legal? Is it right? Or is it beneficial for the working place? So you must be identify these options. Test each options. Legally ये चीज है, यानी अगर पूरी प्रीवियस डेरमा की तरफ चले जाए जिसपे हमने डिस्क्रिमिनेशन की बात की, जिसपे हमने सेफ्टी प्रोडक्ट्स की बात की, जिसमें हमने इवन द ह्यूमन राइट्स की बात की, इट इज लीगल टू प्रोड्यूस दैट प्रोडक्ट्स, इट इज लीगल that we hiring the implies, it is right. It is beneficial for the organization, for the society, for their culture. Decide which option to follow. कौन सा option हमें follow करना है? That good for the all human being. Ask the spotlight question to double check your decisions. Whatever you decide for your organization, for your productions, for your human rights, for your society, that you need to double check your decisions. Yes, that decisions good for our whole country, our whole human being. If the decisions ethical dilemma सिर्फ working place के लिए नहीं है, यहाँ पर तो हम एक नेरो प्रोस्पेक्टिव में पढ़ रहे हैं. अगर ब्रॉड प्रोस्पेक्टिव में पढ़ा जाए तो उसमें हमारी गवर्नमेंट भी आ जाती है. If the government take any decisions, their decisions they appropriate for whole country or only for the particular province or particular people or the particular uh, culture or values. So they must think on that. How would I feel if my family found out about my decision? अगर मेरी फैमिली मेरे लिए कोई डिसीजन ले रही है कि how should I feel that how would I feel if my decision was printed in the local paper or posted online? How do you feel? And then the tech actions. जो भी डिसीजंस लेंगे अगर ऑनलाइन पे आ रहे हैं, अगर पेपर पे पब्लिश हो रहे हैं, तो लोगों पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? How would I feel if my decisions was printed in the local paper or posted online? So the views and ethical ways dilemmas is very much important. Ethical decisions making. किस तरह से एथिकल जो है इन्फ्लुएंस करता है decisions making के ethical framework provide personal rules or strategies for ethical decisions making, include personal values like you must be honest when you make a decision in the working place. Your decisions must be fair. You are very much integrate and self-respect, because when we talk about the self-respect, that is all about the imply on your ethical decisions making, why they imply follow you, why they imply trust you, why they imply give you the authority to make a decisions for the particular people. So self-respect it depends on your actions, your ethical behavior, your ethical attitude when you make a decision. Integrity, how you much honest with your employees, are you much honest with your coordinators, your co-workers, your organizations. जाहिर सी बात है अगर आप ऑर्गेनाइज वर्कर्स से, अपने को वर्कर से, अपनी अथॉरिटी से ऑनेस्ट है, फेयर है, इट मीन्स यू आर ऑनेस्ट विथ योर ऑर्गेनाइजेशन. So including personal values, your honesty, your dignity, your fairness, your self-respect, that all these elements are influence on your ethical decisions making. Then you make ethical decisions making for your organizations when you are honest or fair or clear, and you make a self-respect. Yes, here are some Kohlberg stages of individual moral development, जिसमें फर्स्ट आ रहा है प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल मोरल डेवलपमेंट. अगर प्री कन्वेंशनल की बात की जाए तो फर्स्ट स्टेज है अवॉइड हार्म और पनिशमेंट. यानी फर्स्टली यू हैव टू कॉन्शियस अबाउट
we cannot do, जिसमें हम self centered behavior की बात करते हैं. When we talk about the self centered behavior, so first we avoid harm or punishment. We cannot do सच में, यानी ऐसी कोई भी हमारे जो वैल्यूज है नहीं करें जिसमें हमें पनिशमेंट मिले. मेक डील्स फॉर पर्सनल गेन means how you improve yourself. This self centered behavior जिसमें होता है, जिसमें हमारी जो self respect है वो maintain है. So make a deal for personal gain. Convince social centered behavior like act consistently with peers or others. यानी जो आपका एटीट्यूड है आपका से here we talk about the social centered behavior. It means you behave or your morals or your ethics, your values with with standard. You make a code and standard, they all for the whole implies for the same. आपके peers के साथ, आपकी other people के साथ, आपका जो attitude है, आपका जो behavior है वो centered होना चाहिए, social centered होना चाहिए, equal होना चाहिए. Follow rules, meet obligations. Follow the rules and then you meet the obligations. Whatever the rules and policies हमारे पास है ना, policies बनी हुई है मगर nobody can follow the policies and rules whatever the written. Practice में वो चीजें नहीं है. So follow the rules and meet the obligations. And then the post conventional post conventional यानी after impacts जो होते हैं, live up to social societal expectations. Means societies are implies they must be happy with your attitude, with your behavior. Moral development की यहाँ पे हम stages of individual और moral development की बात कर रहे हैं. इंडिविजुअल एंड मॉरल डेवलपमेंट में फर्स्ट हमारे पास है प्री कन्वेंशनल, यानी हमारा सेंट्रल जो बिहेवियर है, सेल्फ सेंट्रल बिहेवियर, यानी फर्स्ट हम खुद अपने आप को ठीक करें. उसके बाद कन्वेंशनल आ रहा है यानी सोशल सेंट्रल बिहेवियर. व्हेन यू गुड विथ योरसेल्फ, व्हाट वी कैन से दैट किस तरह से कि ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ. जब आप अपने आप से ऑनेस्ट होंगे तभी आप सोसाइटी से ऑनेस्ट होंगे. जब आप सोसाइटी से ऑनेस्ट होगी तब आप जो है प्रिंसिपल सेंटर बिहेवियर के यानी पे फॉलो करेंगे. सो कन्वेंशनल इट मींस गुड विद द अदर्स. पोस्ट कन्वेंशनल में मींस लिव अप टू द सोसाइटिकल एक्सपेक्टेशंस, यानी आप जो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं वो सोसाइटिकल एक्सपेक्टेशंस है या नहीं है. व्हाट्स जिसको कहा जाता है कि society expect from the organization, we people expect from you, what you expect from the society. आप क्या expect कर रहे हैं सोसाइटी से, आप ये चीजें expect क्यों कर रहे हैं सोसाइटी से कि सोसाइटी हमें अच्छा फीडबैक दे. सोसाइटी तब अच्छा एक्सपेक्टेशन देगी जब आप डिसीजंस अच्छे लोगे उनके लिए, जब आप उनके लिए जो भी चीजें बना रहे हो वो क्वालिटी वाइज चीजें बना रहे हो. Act according to internal principles, whatever the internal or international principles, you act according to the internal principles. You don't go beyond or extra जो चला जाए, negativity की तरफ चले जाए. No, according to the what is these are our principles and then we have to follow these principles and then you develop the moral development for the society, individual level, society level, national level. Yes, there are the three levels हमने पढ़ी पर्सनल मोरल डेवलपमेंट की. जिस तरह से फर्स्ट जो था प्री कन्वेंशनल था, लाइक फॉलो रूल्स,
to avoid punishment, act in own interest, blind obedience to authority for its own sake. हम अपने लिए जो हैं अपने standards को जो है maintain करते हैं. Conventional, live up to expectation of others, of the society, fulfill duties and obligations of social systems, uphold laws. Post conventional principles follow internalized universal principles of justice and rights. जब आप ग्लोबल प्रिंसिपल ग्लोबल कम्पैक्ट पे चले जाएंगे तो यू कैन फाइंड अ मोर explanation and more about rules and principles about the justice and rights, balance concerns for the self with concern for the others and the common goods. Act in an independent and ethical manner regardless of expectations of others. What they other expect from you people and why the people expect from you. Yes, situational context and ethical intensity. Will the situation pose an important ethic challenges? जिसमें magnitude of the situations, risk of immediate harm, proximity and concentration of harm, and social consent. So these are the some situations where you avoid unethical behavior, and then you ethical with the behavior. Your behavior must be ethical. Like अगर उसको और explain करें, like management uh, honor towards client, management towards honor towards client or customers, how you behave, the management how behave with the clients and customer, how the management behave with the employees, how the management behave with the co-workers and customers and your employers, or employees towards the employer, employee किस तरह से organization से behave करे, management किस तरह से customer client के साथ